Adorned with verdant valleys, undulating mountains and racing streams. The northeasternmost corner of India welcomes the first golden rays of the morning sun in its soil and presents a myriad of explicit images of the land of the dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh. At a time when the so-called intelligent but invasive species called humans are intensifying their hunger for acquisitive development, a handful of man of the same species have endeavored a righteous approach to nature conservation and habitat preservation. This is their story. Nestled in the eastern Himalayan terrain of West Kameng district of Arunachal Pradesh is the Tenga Valley under the Singchung subdivision. Adjoining the Tenga Valley is an area of incredible natural diversity. This area, with an incredibly diverse flora and fauna, perched at an altitude of 3,300 meters above sea level, is known as the Eagle Nest Wildlife Sanctuary. ये हमारा ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1989 में दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट से कर्व आउट करके नोटिफाई किया गया था। इसका एरिया है 217 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये प्राइमरीली बर्डिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। इसी हमारे सेंचुरी में अराउंड 700 स्पीसीज़ पाया जाता है, 700 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। ये एक इंडिया में एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इतना स्पीसीज़ मिलना। The area in and around the Eagle Nest Wildlife Sanctuary is inhabited by the Bugun community, with Singchung village being the main settlement. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर जो कम्युनिटी एरिया है, कम्युनिटी कंट्रोल्ड एरिया, इसमें हमारा जो एक 2006 में नया बर्ड स्पीसीज़ डिस्कवर किया गया था जिसका नाम है बुगुन लियोचिक्ला। तो ये बुगुन लियोचिक्ला भी क्योंकि बुगुन कम्युनिटी ऑन फॉरेस्ट लैंड में पाया गया था, तो इसलिए बुगुन कम्युनिटी का ओनर ने इसका नाम भी रखा है। तो हमने देखा कि ये चिड़िया का पॉपुलेशन बहुत कम है और इसी एरिया में जो एक कंसंट्रेटेड एरिया में ही दिख रही ये चिड़िया और इसका हैबिटेट को हमें बचाना ज़रूरी है। तो हमने बुगुन कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू किया। तो इस दौरान हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इसको अगर हम कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दें तो टूरिज़्म के थ्रू और गवर्नमेंट से भी आपको और सपोर्ट मिल सकता है। तो शुरू में जब हम लोगों ने बुगुन कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू किया था कम्युनिटी रिजर्व बनाने के लिए, तो कुछ लोगों में अप्रीहेंशंस थे कि क्या कम्युनिटी रिजर्व बनने से हमारा लैंड चला जाएगा, गवर्नमेंट हमारा लैंड ले लेगा क्या। तो हमने समझाया कि कम्युनिटी रिजर्व आपका ही रहेगा, बस आपको कुछ लैंड यूज़ पैटर्न एक प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करना होगा कि उसमें हैबिटेट को बचाना है, जंगल नहीं काटना है। मैनेजमेंट प्लान के अंदर में कुछ चीज़ जो कर सकते हैं वो मेंशन करेंगे। It is worth mentioning that forest lands in Arunachal Pradesh are legally owned by the state's forest department, but the indigenous tribes dwelling around these lands have de facto ownership of these designated forest areas based on customary rights and traditional boundaries. While hunting of wild animals included in the schedule of the Wildlife Protection Act 1972 is banned by law in India, yet some indigenous tribes in the northeast consider it a traditional way of life. The Bugun community too had such traditions until the realization for nature conservation
and habitat preservation surfaced, and eventually the Bugun leaders started having several meetings among themselves about declaration of the Bugun Community Reserve to protect the Bugun Leo-Chikla and other endangered wildlife. बुगुन कम्युनिटी ने बहुत ही खुशी से इस बात को एग्री किया और 2017 में हमने 17 स्क्वायर किलोमीटर खास करके जो बुगुन लियोचिकला वाला हैबिटेट एरिया को हमने एक कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया. Under Section 36C of India's Wildlife Protection Act 1972, finally in January 2017, an area of 17 square kilometers was officially notified as Singchung Bugun Village Community Reserve or SBVCR. The Bugun tribe is an indigenous tribe of Arunachal Pradesh. Initially known as the Khoa tribe, it is one of those initial tribes to be recognized as scheduled tribes of India. They belong to the Indo-Burmese Mongoloid race and follow Mahayana Buddhism. The Singchung village is home to the Bugun community, and as per records, their population amounts to around 3,000 individuals. Historically, the village of Singchung has great significance. The community is predominantly agrarian, fishing and cattle rearing community with their livelihood in and around the hilly confines. The Buguns sustain their livelihood by cultivating vegetables and fruits and by collecting herbs grown in the reserve area. Different vegetables and fruits, primarily the kiwi fruit and maize, are grown in plenty here. But with the official declaration of the reserve area as a village community reserve, the Bugun community has collectively refrained itself from expanding their agricultural farms close to the community reserve. Even those who were farming in these areas have now withdrawn from them and have also ensured others follow the same. मैंने अपना कम्युनिटी रिजर्व के लिए अपने खेती बाड़ी जो ग्लो बाड़ी के नाम से जाना जाते हैं, करीब करीब लगभग 88 एकड़ मैंने अपना खेती बुगुन लियोचिकला के लिए छोड़ दिया है. The Bugun community believes in the power of the spirit of the forest, the hills and the river, and hence their significant association with this concentrated community reserve. As a reverence to nature, the Buguns celebrate the Famkho Sawai festival. Famkho is a harvesting festival. Pham literally means mountain and Kho means water or river, and Sawai stands for festival. According to Bugun belief, the benevolent gods manifest in the form of mountains and rivers and are the primary source of livelihood. Celebrated as a carnival of traditional dances, music, games and cuisines, Famkho Sawai is an expression of unity and brotherhood among the 6 sections that constitute the greater Bugun tribe. The birth of the Singchung Bugun Village Community Reserve or SBVCR brought along with it key responsibilities for the villagers to shoulder. हमारे कमेटी में 11 मेंबर्स है हमारा, और हम लोग महीना में 2 बार मीटिंग करते हैं. उस मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड करता है कि हमारा जो आगे आने वाला जो एरिया है उसको किस तरह से और डेवलप करना है, आगे कैसे उन्नति करना है, उसके बारे में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं. Accordingly, a 11-member Singchung Village Community Reserve Management Committee was constituted. In order to ensure protection and preservation of the community reserve,
a 10-member patrolling staff was appointed. कम्युनिटी रिजर्व एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में वैसे ही एक प्रोटेक्टेड एरिया है जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है। तो जब से ये कम्युनिटी रिजर्व बना है, एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी हमने बनाया है, उसके अंदर बुगुन 10 यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। वो पेट्रोल करते हैं इस एरिया में, 17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स हमारे रेंजर को सबमिट करते हैं। This young team of patrolling staff from Sengchung has received grounding in patrolling, ambush, unarmed combat and are also trained in snake handling, bird watching and others. मेरा स्टाफ में 9 लड़का है और 1 लड़की है, टोटल 10 है। हमारा धर्म सिंह मोड़ में एक चेक पोस्ट है हमारा, वहाँ पर हर 4 दिन में 2 लड़का 4 दिन करके ड्यूटी करते हैं। हमारा जो भी एरिया में आता है गाड़ी, तो उसको चेक किया जाता है, फिर उसको कितना सामान कहाँ जा रहा है वो पूरा चेक करता है सेंट्री के द्वारा। कहाँ से है? गुवाहाटी से आया, ऊपर जाएगा। ईगल्स। हाँ, ईगल्स में। तो आगे में थोड़ा पार्किंग करके एंट्री करके जाएगा। ठीक है। टोटल आदमी कितना है उसको भी एंट्री होता है, गाड़ी नंबर एंट्री होता है हमारा, और कितना दिन तक के लिए जाते हैं वो टोटल एंट्री किया जाता है और उनको कैश मेमो दिया जाता है। These guards ensure that no plastic bottles, plastic materials, batteries are carried inside the concentrated reserve area. Even if anybody is allowed to carry them inside, they ensure that the exact number of materials carried inside the park is brought back while returning. The patrolling team, which works 24/7, are not sufficiently equipped to protect themselves, yet they work diligently to keep the Sengchung Bugun Village Community Reserve free from poaching and illegal encroachments and have never been deterred by the absence of implements essential for guarding and patrolling. कभी कभी ऐसा होता है शिकारी घुस जाता है जंगल में, तो हम लोग को जाना पड़ता है कि पकड़ने के लिए। तो उन लोगों के पास हथियार होता है, गन। वो लोग बहुत अलग अलग तरह का गन लेके आता है, जैसे कि शॉट गन वगैरह, राइफल, ये सब लेके आता है। तो हम लोग के पास कुछ नहीं होता है सिवाय दाव का अलावा। तो दाव से तो हम लोग कुछ नहीं कर पाता, फिर भी हम लोग अपना जान को पीछे रख के हम लोग उसको बचाने के लिए और मना करने या पकड़ने के लिए हम लोग चला जाता है। The team of 10 would be divided into 4 teams for patrolling, and they would patrol different routes every day. The patrolling teams switch on their GPS systems to mark their start location and maintain track logs to check if any incidents of hunting has taken place. Any suspicious thing found within the reserve confines is immediately reported to the coordinator, who in turn submits the report to the divisional forest officer, chairman and other superiors of the village council. अगर कहीं बार्गिंग डियर का हो गया, बियर हो गया, एलिफेंट, कुछ का भी मार्क अगर हम लोग को मिलता है, मार्क फुट मार्क या जैसे टॉयलेट वगैरह ये सब मिलता है, तो भी हम लोग उसको जीपीएस का साथ साथ में मार्किंग करता है। अगर कोई पुराना चांग बना के रखा होगा, शिकारी लोग का चांग बनाता, तो हम लोग उसको गिरा देता है काट के। और जंगल जाते समय में कभी कभार वायर मिल जाता है, तो हम लोग उसको उठा के जीपीएस लोकेशन लेता है और नोटबुक में नोट करके हम लोग ले जाता है। और कभी तो कारतूस भी मिल जाता हम लोग को, तो ऐसा करके कभी कहीं फांसी फंदा ये सब मिलता है, उसको भी हम लोग काट के जो वायर है उसको हम लोग लेके आता है। Apart from these responsibilities, members of the patrolling staff
would often look out for new species of flora and fauna. पेट्रोलिंग में जहाँ बाइक जाता है, मोटरसाइकिल जाता है, वहाँ तक हम लोग बाइक से जाते हैं। और जहाँ हमारा जंगल एरिया, जहाँ बाइक नहीं जाता है, तो उस एरिया पर लड़का लोग ऑन फुट चलता है, पैदल जाता है। पैदल जा करके अपना एरिया को देखभाल करता है। उस एरिया में देखभाल इसलिए करता है कि कहीं हमारा एरिया में जो शेरप का एरिया है उसका अंदर में कोई जानवर तो नहीं मार रहा है, या कोई चिड़िया तो नहीं मार रहा है, और कोई पेड़ तो नहीं काट रहा है। Patrolling is carried out to check the boundaries of the community reserve as well as to ensure that no outsiders are interfering with the boundaries of the community reserve. सीआर स्टाफ में 2 लड़का जो है बेंगलोर से सांप का ट्रेनिंग करके आया, तो इन 2 लड़का ने काफ़ी सांप को रेस्क्यू किया है, जो कि मोनोकल कोबरा हो गया, किंग कोबरा, ईस्टर्न ट्रिंकेट, हिमालयन ट्रिंकेट हो गया, और ग्रीन रेड स्नैक, और साथ साथ में हिमालयन किलबैग, और उसका बाद रेड नेक किलबैग काफ़ी रेस्क्यू किया। और साथ साथ में हम लोग बार्गिंग डियर को भी रेस्क्यू किया है, और एक छोटा सा लेपर्ड कैट का बच्चा को भी हम लोग रेस्क्यू करके जिसको ईटानगर भेज दिया। Patrolling teams patrol the areas of Globari and Lama Camp, as well as Chitrabasti, Helipad and Damdam Nala to Khongnala of the community reserve. हमारा कम्युनिटी रिजर्व की गार्ड पेट्रोलिंग के साथ साथ में फ्री प्लास्टिक और टूरिस्ट लोगों ने जो गंदगी करके जाता है, इनका कलेक्शन करके गंदगी का साथ साथ में उसको डिस्पोजल करता है। और हम लोग जब पेट्रोलिंग जाता है तो हम लोग का साथ बैग भी रहता है, तो कहीं भी अगर कचरा मिलता है तो हम लोग उसको तुरंत उठा के बैग में डाल के लेके आता है। In a bid to reach out to more and more, as well as create awareness amongst the people regarding the Singchung Bugun Village Community Reserve, activity and awareness camps are organized from time to time. During these camps, students are engaged in birding and tracking, identification of different species of flora and fauna, snake handling, and many more. These camps have been happening here for the last 7 years, where children from the local schools come and be part of the biodiversity modules that are taken by the SPVCR staff and with the support of the Sherkam Forest Division. And these camps are one of the most sought after calendar events that happen around this area. Every year there are about 90 students who come in 2 batches of 45 and 45. And there are 30 teachers that are trained from the local schools around. So far we must have trained around 400 students around these protected areas and about 150 teachers. It has been realized that such camps have enabled the children for wildlife conservation and also carry forward the richness and rich heritage of the Singchung Bugun Village Community Reserve. हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि हमें ये बार हमारे प्लास्टिक के बारे में बताया हमें। और यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सन आए जो हमें बहुत सारा नॉलेज दिए। और साथ ही साथ हमें ट्रैकिंग के लिए गए, हम सुबह उठते बर्डिंग के लिए गए हम, और काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज़ भी देखे हमने। और इस कैंप में हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें कुछ एक्टिविटी कराया है, जो एक्टिविटी की वजह से हमें साथ ही साथ नॉलेज भी मिलते हैं, साथ में इंजॉयमेंट भी होता है। और साथ हमें टेंट पे रहना पड़ता है, ये भी हमारे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें घर पे रह के हम बोर हो जाते, तो टेंट पे रहने के लिए हमें अच्छा लगता है। और काफ़ी नए स्कूल के नए दोस्त बनते हैं हमें। Apart from employment in the reserve area, the youth have also found their way into various ecotourism activities. पहले यहाँ प्राइमरीली बुगुन कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में
इको टूरिज़म एक्टिविटीज़ खास करके बर्डिंग के लिए लोग आते थे, बट अभी रिसेंटली इन लोगों ने अपना बर्डिंग से जितना इनकम आए उसके हेल्प से और इनको जितना कैश अवार्ड्स मिले हैं कंजर्वेशन के लिए, उसके मदद से इन लोगों ने अभी रिसेंटली रोप कोर्स एक्टिविटीज़ शुरू किया है। रोप कोर्स एक्टिविटीज़ के अंदर में जुमरिंग, जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, रैपलिंग और लेडर क्लाइंबिंग, ये 5 एक्टिविटीज़ अभी शुरू किए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ अभी यहाँ लोकल्स के बीच में एक बहुत बड़ा अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है। The community reserve, as it is today, has been possible because of the tireless efforts of the Singchung Bugun village community, as well as for the community reserve boys for their painstaking and tireless efforts in the conservation and preservation of their very own community reserve, which is a gift to the whole world to explore. With an aim to acknowledge and reward the tireless work and commitment towards protection and preservation of the community reserve by the community reserve boys, the Singchung Bugun Village Community Reserve Management Committee, along with the state's Forest Department, organize felicitation programs from time to time. This gesture boosts the spirits of the CR boys and encourages them to do even better for the community reserve. As has already been mentioned earlier, the discovery of the rare and endangered Bugun Liochikla and the coming up of the Singchung Bugun Village Community Reserve have kick-started a flow of activities in the region. Financial developments have started taking place. Hotels are coming up to accommodate the increasing inflow of tourists. Simultaneously, employment opportunities are unfolding for the youths of the region. जिस तरह से इको टूरिज़म एक्टिविटीज़ से इनको जो लाइवलीहुड ऑप्शंस मिले हैं, 10 यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला है और काफ़ी टूरिज़म एक्टिविटीज़ यहाँ चले हैं। कुछ लोगों को दूसरे तरीके से जैसे बर्ड गाइड के रूप में, या कुछ लोगों को कैंपिंग के थ्रू जो इनकम सोर्स मिला है, तो इससे लोग अभी कन्विंस हो गए कि कम्युनिटी रिजर्व बनने से इनको फ़ायदा ही हुआ है। Also, places like Lama Camp, situated at the village community reserve at an elevation of 2,500 meters above sea level, has been developed into a permanent campsite offering tented accommodation and provides a spectacular view of the snow-capped Chai Niamao mountain or the mountain of white clay, apart from being a perfect location to spot the rare Bugun Liochikla bird. Another place called Ramalingam in the community forest has a forest rest house and a tourist camp for tourists. There is also the Nature Interpretation Center in Ramalingam, where one can avail information about various flora and fauna of the region. It also offers visitors the pleasure of listening to numerous pre-recorded voices of different species of birds. Have the efforts undertaken to preserve and conserve the diverse wildlife environment of the region yielded any benefits? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये फ़ायदा रहा कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक बाहर कम्युनिटी रिजर्व होने के वजह से कम्युनिटी रिजर्व जितने एंट्रीज होते हैं ईगल नेस्ट सेंचुरी के अंदर, वो कम्युनिटी रिजर्व से होकर ही आते हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कम्युनिटी रिजर्व एक कुशन की तरह काम कर रहे हैं। बाहरी प्रोटेक्शन मिल रहा है तो सेंचुरी के अंदर सेंचुरी को ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ा ख़ास बात कम्युनिटी रिजर्व में ये है कि ये कैचमेंट एरिया है, तो यहाँ से
जितने जो सिंगचुंग विलेज या आसपास तेंगा वैली के जो आसपास गांव और जो टाउन्स है उसमें जितना वाटर सोर्स है वो यहीं से कम्युनिटी रिजर्व से होके आ रहे हैं। इसको प्रोटेक्शन मिलने से वाटर सोर्स का भी एक प्रोटेक्शन मिला है, एक सिक्योर हुआ है वाटर सोर्स। लोगों के लिए एक इकोलॉजिकल सर्विस का भी इन लोगों ने एक अच्छा सुविधा कर लिया कम्युनिटी रिजर्व बनने की वजह से, और ईगल नेस्ट सेंचुरी के लिए तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो गया। The coming up of the Singchung Bugun Village Community Reserve is a glaring example of how a small community numbering only around 3,000 has dedicated themselves to conservation and preservation of nature to the extent that they have even relinquished their own settlement and farming areas not only for its subsistence and preservation of their village community reserve but also to extend its boundaries. 17 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया कवर करता है। अब हमने फिर एडिशन 20 स्क्वायर मीटर देने जा रहा है। टोटल हमारा 37 स्क्वायर किलोमीटर ये सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में ये कवर होता है। Bugun Leochikla's discovery in 2006 and the presence of around 700 species of birds and other wildlife in the community area kick-started a cascade of conservation activities in the 17 square kilometer biodiversity hotspot. Their effort towards this conservation is really noteworthy, and I think it is not only for the people of Arunachal Pradesh but for the entire Northeast community to emulate the sacrifice, the effort that they have made. And this community reserve where I'm standing at the moment is really something to be proud of for every Indian, because this bird is found nowhere else in the world. With the Singchung Bugun Village Community Reserve being awarded the Indian Biodiversity Award 2018 under the Conservation of Wild Species category, it has become a benchmark of nature conservation and habitat preservation for other communities to follow. At a time when natural habitats are destroyed in the name of development, the Bugun community has proved to the world that growth and expansion for advancement can well be achieved by preservation and conservation of natural habitats. If a handful of men of the Bugun community can do such wonders of protecting and preserving their environment, can't other communities emulate the same?